नमस्कार दोस्तों, अरुण म्यूजिक कंपनी आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक अग्रवाल। कभी कभार हमको वीडियो की डिमांड आती है। जो लोग हमसे हारमोनियम खरीदते हैं, इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर जाता है, तो उनकी डिमांड आती है कि हमारा हारमोनियम का कपलर जो है वो फ्लिप कर गया है, चाबियां सब उल्टी पुल्टी हो गई है। आज हम एक छोटी डेमो में आपको बताएंगे कि आप उसको खुद ही घर बैठ के कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुण म्यूजिक एम्पोरियो। माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल। Like lot of time we are getting a message or call on our Facebook or YouTube section during transist. The harmonium you bought from us, the keys of the harmonium got flipped, mean the coupler got flipped. How to rectify? In India it's very easy to get repair with any mechanic, but out of India, like people ask me, like they have to pay $150. So today we are giving a short demo how you can rectify this flipping of coupler at your own. Kindly watch the video till end. This video will help you a lot. दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझाएंगे इसमें, और आप कभी कपड़ा पलट भी जाता है उसके अंदर आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। पहले करना क्या है उसमें आपको बता रहा हूँ। जो कपड़ा पलट जाता है उसमें आप देखते होंगे चाबी आपके कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाती है। Like might be at the time of flipping of coupler, you might see the keys got stuck like this. I hope you can see this video. And like our store is under renovation, so I'm making this video from a warehouse. Actually हमारा स्टोर जो है अभी रेनोवेशन पे है, तो वीडियो मैं पीछे अपने गोडाउन में बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये कॉर्नर का जो आपका बोल्ट है ये आपको लूज कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रू ड्राइवर एंड अनलूज दिस बोल्ट। ओके, यू सी दिस। कपड़ा ठीक करने के लिए आपको केवल ऊपर का ही नट खोलना है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। If you want to like rectify your coupler thing, you need to just open these two. No need to open this one, okay? Now, don't forget to mention the number on the keys. See, from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Like my model is 39 keys harmonium. I'm giving just a demo. This is 39 keys harmonium. So I have mentioned all the numbers. Because we are going to remove all the keys. So, if numbers you will not mention the number, the keys will mix and might be give you trouble after playing. अगर इसमें आप नंबर नहीं लिखेंगे तो चाबी शायद आपकी मिल जाएंगी, आपको दिक्कत भी होगी, तो आपको सारे नंबर इसमें रख लेने हैं। उसके बाद स्टेप 2 है आपका इसमें। अगर आपका कपलर राइट की तरफ है, आगे की तरफ, इसका मतलब कपलर अभी ऑन है, जैसा आप देख सकते हैं एक के साथ एक बजता है। इसको आप ऑफ कर दीजिए। As you can see, like if the coupler position is in the above side, the coupler is working okay. Make it switch it off by pulling on this side. Now take all the keys one by one. एक एक करके सारी आपको चाबियां बाहर निकालनी है। अभी देख सकते हैं आप, सब पे मेंशन है ये नंबर 1 to 39, because ये हारमोनियम 13 keys का है। As you can see, like we have mentioned 1 and up to 39, because today I am using 39 keys harmonium. Now take all the keys one by one. Pull the keys very gently. चाबियों को बहुत आराम से आपको हटाना है अपनी जगह से, और इसके नीचे कपलर के लिए एक पार्ट लगा होता है। ये देख रहे हैं आप पार्ट? कैन यू सी दिस पार्ट? दिस होल्ड द कपलर। सो काइंडली रिमूव द कीज वेरी जेंटली। आई हैव केप्ट ऑल द कीज इन अ सिमेट्री लाइक 1 to 39। मैंने अपनी सारी जो कीज है वो 1 to 39 की वहां पे रख दी साइड में, ताकि जब मेरे को यूज होगा तो मैं आफ्टर रिपेयरिंग दिस मैं इसको रख के वहां रख दूंगा। Now what coupler, let me show you what
problem you're facing. I hope you can see this. You see this? The moving part? Let me show you from this side. ये देख रहे हैं आप? ये जो पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, और ये देखिए कितनी चाबियों का ये कपलर जो है ऊपर नीचे हो गया है. You can see this, like few of these lines are like out of their range. This is the main reason flipping of coupler at the time of transist. Okay, now what you have to, you see this, you see, if I am pulling this one, you can see the higher octave of the same keys is going up and down, even open here. This is a mechanism for the coupler. At the switch on position, switch off position, ये है मैकेनिज्म कपलर का. ये अभी कपलर ऑन है, कीज काम करेंगे, आपको दिखाऊंगा करना कैसे ठीक है आपको, और ये भी ऑफ है. नाउ लेट मी पुट माय मोबाइल हियर, सो लाइक no, I think this will be better. Okay, this side. Now what you have to do is switch off the coupler. Okay, now take the key for the very left side, the last key, 39 number key. Okay, this is the last key, 39 number, or it might be 42 number. If you are having harmonium of 3.5 octave, this will be 42nd number. Right now I am making demo on 39 keys harmonium. Like things is same, process is same, there's a different of only octave. अगर आपके पास 3.25 सप्तक का बाजा है तो आपका ये 39 नंबर चाबी होगी 39. अगर आपका बाजा है 3.5 सप्तक का तो ये चाबी होगी 42 की, इसकी 42 चाबी की. अब आपको लास्ट में करना क्या है, ये आप इसका देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं, हाँ आई होप अच्छा दिख रहा हूँ. ये आप देख रहे हैं, ठीक है. इसका जो फ्रंट, जो इसका आप लेफ्ट साइड में पार्ट देखेंगे, जो कपड़ा मूव कर रहा है, आपको इसको पिक करना है, इसको ऊपर कर लेना है आपको, ठीक है, ऊपर कर लेना है इसको आपको. और यहाँ पे एक पतली तार है, यहाँ पे एक छोटी सी नेल है, कील है. यू हैव टू पुल दिस फ्रॉम दिस साइड. नाउ यू कैन सी द स्मॉलर कपलर. ओके, डू इट, keep it in this position. Okay, and now fix it very gently. And do one thing, you also check the leather part, okay, before fixing back. Sometime a dust particle or wood particle won't be able to give you sound, the sound get buzzing. Okay, so before keeping the keys back, you can like rub it or put some pressure here. Okay, now it's totally clear, now it's ready to put down. ये थोड़ा साफ कर लीजिएगा, कभी कभी यहाँ पे बुरादा लकड़ी का आ जाता है तो आवाज वो जो है अपने पानी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे इतनी जगह नहीं होती है, तो ये कीज उड़ जाती है अपनी जगह से, वो फिर रेगुलर आवाज आती है. तो वो भी आप खुद कर सकते हैं इसको. आपको ये लास्ट पे लगाना है, कीप इट लाइक दिस. ओके, ये जो छोटा नेल है, यू सी दिस नेल, दिस होल, द होल विल गो ऑन दिस नेल. This part, this, you see the cut will go on this nail, the bigger nail. Okay, and as I told you, the coupler, you see, you check this, you can see this moving. Coupler should be in off position. Okay, pull this one, and now whenever I'm gonna on this coupler, it will work. Oh, sorry. You see, because I'm pressing the lower octave of the same key. You see, it's working. Okay, same with the second one. Now key number 38. Key number 38. Same process.
द टाइम ऑफ पुटिंग कपलर बैक, कपलर शुड बी ऑन। जब इसको आप वापस रख रहे हैं, कपलर को ऑन करना है आपको। अब आपने ये दूसरी कीज उठाई 38 नंबर की, इसको लगा दिया कपलर के साथ। वही सेम पार्ट जो है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जो छोटे वाला पार्ट है वो इसके नीचे आता है। द स्मॉलर पार्ट ऑफ द कपलर इज मेड टू प्रेस दिस डाउन। And put this, ये पार्ट है, ब्रास का पार्ट है, put this back. 38, 39. Now same 37. You have to start from left to right side. Sorry, right to left side, okay? From lower octave to higher octave. आपको from higher octave to lower octave आपको लेफ्ट इसके राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। 39 से एक नंबर की तरफ आना है। हायर स्केल से ऑक्टेव से लोअर स्केल की तरफ आना है आपको। नाउ की नंबर 37, द प्रोसेस इज सेम। लेट मी शो यू फ्रॉम लाइक फ्रंट लुक ऑल्सो। यू सी दिस पार्ट, दिस कट, ओके, एंड यू कैन सी द नेल हेयर। देयर इज ओनली 2 nail, one is the bigger one and one is the smaller one. You see the smaller one and the bigger one. You see how I'm fixing it, and pull this up, put it on the key, okay? You see 39, 38, 37, okay? And do it very gently. बहुत आराम से इसको करिएगा। Actually, as I told you in the beginning, my store is under renovation. So, but this video was in high demand from last few days, so I thought I should make this video. जैसे सब जानते हैं हमारा स्टोर से अभी रेनोवेशन पे है और इसकी काफ़ी मुझे डिमांड आ रही थी वीडियो की, तो मैं कहनी मुझे बनाना चाहिए और ये किसी की भी हेल्प आ सकती है। देखिए हार्मोनियम म्यूजिक का मोटो वही है कि हम हेल्प करते हैं। इस वीडियो को कोई भी देखेगा यूट्यूब पे, वो पर्सन अपना खुद ठीक कर सकता है। सेम प्रोसेस 36 नंबर की। See, actually what happened during transit, you know, like especially out of India, we always pack harmonium very well, but you know, sometimes we bought from some other person, we don't know how they have packed. So this kind of flipping of keys is very normal. This is not a rocket science. ये फ्लिप हो जाते हैं कपलर कभी कभार। हिंदी भाषा में कहते हैं इसका कपलर पलट गया, तो इसको ठीक करने की है ये छोटी सी डेमो वीडियो। सेम कीज नंबर आप 35 पे आएंगे। 35 कपलर ऑन रहेगा हमेशा। डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑन द कपलर, ओके? अदरवाइज फ्यू कीज विल वर्क, फ्यू विल नॉट। कपड़ा हमेशा ऑन रखिएगा, अदरवाइज कुछ अभी काम करेंगी ढंग से, कुछ काम नहीं करेंगी और ये प्रोसेस आपको फिर दोबारा करना पड़ सकता है। ये थोड़ा सा मैं इसको लूज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइट ज्यादा हो रखा है, तो वो चाबी लगाते हुए अटक रहा हाथ मेरा। सेम प्रोसेस फॉर द की नंबर 33। Now I'm on key number 17. Now same 16. The process is same for all things, especially for 39 and 42 keys harmonium. Because we don't want to make a video very long, so like you know, I paused for a few minutes. Now I'm key number 15 up on. वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ी रोक दी थी बीच में, मैं 17, 16, 15 पे आ गया हूँ। प्रोसेस सेम है, 3.25 का हारमोनियम हो चाहे आपका 3.5 का हारमोनियम हो, 39 कीज का हारमोनियम या आपका 42 कीज का हारमोनियम, प्रोसेस सबका सेम है। कपलर जो शुरू होता है वो होता है 13 नंबर कीज से।
The coupler starts from 13 number. After that, you can see all the lines are up now. जो पहले पलट गई थी, before it was flipped in your harmonium, now they are working in fine. Okay, and coupler start from 13 numbers. So now from 12 to 1, you just have to simply put the keys. There's no need to pull anything else. Okay, just a moment. Same with 11. Because from 1 to 11 keys, this lower part will press down the same octave for your harmonium. You see this? I'll show you. Key number 10 is pressing the key number 22. Pressing down. You see, key number 11 is pressing the key number 23. जो उसका हायर ऑक्टेव है वो उसी को प्रेस करेगा. Keep the keys very gently. Okay. And once you make it, unless your harmonium got flipped once again, like during transport and all, this will not give you any trouble. जब तक अगली बार ये पलटता नहीं हारमोनियम आपका, तब तक कपड़े की कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये एक बार करने का देर होती है. And it's very easy to use. Key number 4. Key number 3. Key number 2 and number 1. That's it. Now, after doing this, always check once again. Switch off the coupler. If this was not done correctly, from any other key, one of the key will be up, but as you can see, all keys are in their position. अगर ये सही से नहीं हुआ होता भी तो कोई ना कोई चाबी इसके ऊपर आ चुकी थी अपने आप. इसका मतलब ये ठीक हो चुका है. Now switch the coupler on and check your harmonium. All the keys are working properly. You can check. After that, see again. You may try without coupling. Try to play without coupler. एक बार कोशिश करिए बिना कपलर के बजाने की इसको. एक बार इसको कपलर ऑन कर लीजिए. After that, you may put this wooden part back and screw it gently, not very tight, not very loose.
and try to put this nut along with some magnet or in a bowl, because I just lost it, but very soon I'll put it back. इसको थोड़ा आप नट को आप किसी मैग्नेट या कटोरी में रखिएगा, वरना खो जाते हुए मिलते नहीं आराम से। अभी तो मिल गया, दिक्कत नहीं उसमें मेरे को। अब इसकी जो ग्रिल है आप इसको वापस लगाइए। ये आपका कपलर ऑन है। So I have tried my best to guide you how to repair your coupler, flip coupler. मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की कि जो अगर आपका हारमोनियम का कपलर पलट जाता है तो ठीक कैसे करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जब मेरे पास टाइम होगा हम आपको उसमें रिप्लाई देंगे। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन कर देंगे। इफ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट अस एंड वी विल मेंशन आवर व्हाट्सएप नंबर आल्सो। Whenever we are free, we'll try our best to give you a reply as soon as possible. आप सभी ने इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, and thank you very much for watching this video till end.